So today's topic is plastic money. So plastic money is a term used to represent the hard plastic cards used in day-to-day life in place of actual banknotes. They come in several forms such as debit card, credit card, store card and prepaid cash card. सो प्लास्टिक मनी का मतलब क्या हुआ, जो आप कैश की जगह पर यूज़ करते हो इंस्टेड ऑफ कैश, इंस्टेड ऑफ पेपर मनी, इंस्टेड ऑफ नोट्स, है ना. और यू कैन से plastic money is nothing but the alternate of hard cash or alternate of paper money, and it is a widely popular and mostly used mode of transaction. So let's see the advantages of it. The first one is convenience. Definitely plastic money enhances the convenience of customers, because it becomes very easy to transact online, it becomes very easy to shop online, it becomes very easy to place your order and proceed the payment process. So obviously it is more convenient than the use of paper money. You can carry plastic money very easily, you can safely put it into your pocket, so it is very convenient to use. The second one is check counterfeiting. Counterfeiting can be checked or counterfeiting can be reduced with the use of plastic money. Counterfeiting मतलब होता है डुप्लीकेट करना या इलीगल तरीके से किसी चीज़ की डुप्लीकेट कॉपी बनाना या उसका सिमिलर वर्जन बनाना, जैसे कि यू कैन से फॉर्ज करना या फिर इमिटेशन, जैसे कि साइन फॉर्ज किए जाते हैं. वैसे ही पेपर करेंसी की भी काउंटरफीटिंग पॉसिबल है. पेपर करेंसी की डुप्लीकेट कॉपीज़ मिलती हैं, नकली नोट जिसे कहते हैं. तो काउंटरफीटिंग इज़ क्वाइट पॉसिबल इन केस ऑफ पेपर मनी, बट it is quite difficult in case of plastic money. So definitely plastic money reduces the counterfeiting, chances of counterfeiting. Now come to the next one, long life of plastic currency notes. So plastic money is made of hard plastic, so definitely it has long life in comparison to paper notes, in comparison to hard cash. If we talk about paper money, it is made of paper and जल्दी फट जाते हैं जब आप उसको यूज़ करते हो. व्हेन इट सर्कुलेट्स सो मच एंड व्हेन इट गोज़ हैंड टू हैंड, दैन डेफिनेटली उनकी कंडीशन अच्छी नहीं रहती है. तो पेपर करेंसी के कंपैरिजन में प्लास्टिक करेंसी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा लंबे समय तक आप उसका यूज़ ईजिली कर सकते हो. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, विच इज़ चेक ऑन ब्लैक मनी. ब्लैक मनी, काला धन. It is possible to trace the financial transactions done through the cards. कार्ड्स के थ्रू जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी मनी का ट्रांसफ़र होता है, उनको ट्रैक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनकी ऑनलाइन रिकॉर्ड उनका बनता जाता है, उनका स्टेटमेंट बन जाता है, उनकी एंट्रीज़ हो जाती हैं. तो उसको ट्रैक करना बहुत आसान होता है. बैंक से जाके उन ट्रांजेक्शन्स का स्टेटमेंट ईजिली निकाला जा सकता है. पर अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, कोई कहीं पर कुछ स्टेटमेंट नहीं रहता. तो ब्लैक मनी को ट्रेस करना, कैश में अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो या पेपर करेंसी में कर रहे हो तो मुश्किल होता है. और अगर आप प्लास्टिक मनी से कर रहे हो तो ब्लैक मनी को ट्रेस कर पाना रैदर देन आसान हो जाता है. सो नेक्स्ट वन इज supports the growth of e-commerce. Definitely we are living in the era of e-commerce. E-commerce means electronic commerce, when we are dealing online via online mode, when we are shopping online, and so payments can be easily done through plastic money. If you are using plastic money, then definitely payments are quite easy to complete. So it supports the growth of e-commerce. Next one is power of purchasing. Debit or credit card made it easier to buy things. Definitely in the era of e-commerce, it is quite easy to place the order, but plastic money actually makes it easy to process your payment also. Not only placement of order can be done easily, even the process of payment can be also done easily. The next one is time saving.
प्लास्टिक मनी डेफिनेटली सेव्स द टाइम एंड एनर्जी बोथ. जब आप बैंक से डीलिंग करते थे, बैंक में जाकर पैसे निकालते थे और बैंक से सारे ट्रांजेक्शन करते थे, तो आपको क्यूज़ में लगना पड़ता था, वहाँ पर टाइम लगता था, काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता था और काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था. अब आज के टाइम में क्या है, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप इजीली एटीएम से जाकर पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. अगर आपके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, कैश नहीं है, तब भी आप मॉल्स में या स्टोर्स पर जहाँ पर ये प्लास्टिक मनी एक्सेप्टेबल है, वहाँ पर आप इजीली अपना पेमेंट प्रोसेस कर सकते हो. तो ऑब्वियसली इट सेव्स योर टाइम, इट सेव्स योर एनर्जी. द नेक्स्ट वन इज सेफ्टी. When we talk about paper money, it is difficult to carry huge amount of paper money with you at the time of traveling. जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैश को साथ ले जाना बहुत रिस्की हो जाता है. There is always a risk of theft, there is always a risk of robbery. So it can be reduced or it can be finished with the use of plastic money. Now come to the disadvantages. Definitely if plastic money has some advantages, then on the other hand it has some disadvantages also. The first one is shops using other vendors. Numerous shops accept credit cards of a specific company only. There are various financial institutions and there are various financial companies which are providing credit card to the customers, and there is a problem of acceptance. There are various shops which will not accept your card if it is not the if it does not fall in the criteria of their terms and conditions. If they are accepting the credit cards of a specific company, and if your company is not the same, then definitely they will not accept your card. So this is the problem. The second one is less availability. Less availability can be easily observed in the case of street vendors, street hawkers, small stores, general merchant shops. As you see, if you go to the market and if you completely depend on the plastic money, then definitely it will become difficult for you to shop everything from the market. If you talk about the street vendors, if you talk about the street hawkers or the small retailers, small stores, they still they don't accept the plastic money. They don't accept the payment via online mode. So you have to carry some cash with you. You cannot completely rely on the plastic money in that case. If we talk about India especially, or you can say developing countries, the next one is an issue with magnetic strip. डेबिट कार्ड की दूसरी साइड, जो उसका बैक साइड होता है, वहाँ पर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है ब्लैक कलर की, जो आपकी पेमेंट को प्रोसेस करने में हेल्प करती है. तो अगर उसमें किसी भी तरह का कोई डैमेज हो जाता है तो आपका पेमेंट प्रोसेस नहीं होगा, आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एटीएम मशीन में, पीओएस मशीन में. सो इट इज़ अ प्रॉब्लम एक्चुअली व्हेन वी ट्रांजैक्ट अगेन एंड अगेन, व्हेन वी यूज़ अवर डेबिट कार्ड various times, then it is very common that it gets damaged or some problem with it. So in that case there is a need to replace it or to return it to the bank and they will issue a new card to you. The next one is increased debts and rates of high interest. Definitely if you talk about the credit card, there is a high interest rate. If you don't pay the amount on the time, then there is high penalty also, the high penalty or high interest rate. And when we have credit card in our pocket, it is a kind of debts, it is a kind of advance. We don't have that much money in our account, but still we can use that limit. So it is a kind of debt, it is a kind of advance, and sometimes we don't have amount in our account, still we shop so much, and sometimes it is seen that credit card holders overspend sometimes, so you can say they become extravagant. And the last one is fraud, which is very common. Today we can see with the increasing use of plastic money, with the increasing use of e-commerce, there is also
an increase in the cases of cybercrime, in the cases of fraud, in the cases of forgery and misconduct, online misconduct. So it is a very common and very big issue in the especially in India. We say it is a global issue, but in India it is quite common. So these are some advantages and disadvantages of plastic money, and I have also covered the meaning of plastic money. So thank you so much.